Hi all, welcome all to Odisha Civils. Union Budget of 2026-27. Today we are going to discuss about on the precise and concise important points. ता पूर्व आम जाना कि budget what टा आसला कोठु budget what is basically जदि if we analyze the facts, then budget as a word there is no mention in your Indian constitution. Rather, in Article 112 is basically Indian Constitution. Article 112 is talks about the financial statement. So basically financial statement that is जोटा कि हमें कहू ताकू बजेट हिसाब पर हमें बाहर को बट एक्चुअली यदि तमे देखिबो कि बजेट जो वर्ड टा गोटे एक्शन बैग एंड इट्स एन जोटा कि हमें इंग्लिश जोटा कहबो ताकू दस्तावेज राइट बट एक्चुअली यदि देखिबो कि financial statement mainly is it gives an entire vivid picture of the budget. So before that one, let us know कि what do we mean by the budget? Budget माने कौन? Budget basically देखिबा जदि कि हमारो it's a जदि देखिबा कि it's income versus expenditure. The calculations versus the income versus expenditure is basically known as the budget. Budget हम कहबा कि income हैला केते हमर income आसी आउ केते expenditure, right? केते हमरो expenditure, right? That is called your budget. So आज हमें vividly हमें जानिबा पढिबा कि को जगह केमती your income or expenditure कौन आसी. Before that one, our finance minister madam Nirmala Sitharaman, she has projected a very important points on the budgets, and this budget basically it was believed to be one of the best budget in this decade. जदि हम देखिबा कि decade काहेकि because it mainly focus on the in the lower strata to uplift India from the root sections and what the country India that faces from the tariff restrictions and other foreign factors that retards the growth of the country. That is basically for that this budget is overall design. So let us know, right? Jadi देखिए this Union Budget 2026-27 is a Yuva Shakti driven budget basically. Okay, it's basically an Yuva Shakti driven budget. Okay, by mainly prioritizing or focusing on the youths को लिखा हुआ. Then government emphasizes on the commitment to focus. कहाँ पर focus करेंगे to poor, right? Poor, underprivileged and disadvantaged strata. Right? देखो, एटी हमें देखो कौन हम majorly कि poor, underprivileged and disadvantaged strata. Mainly it focuses on, right? Just one second. So our finance minister madam Nirmala Sitharaman that presented the Union Budget 26-27 2026-27 that which is the first budget prepared in कर्तव्य भवन. जदि हम देखिबा कि कर्तव्य भवन जोटा हमर अछि हला फर्स्ट टाइम बाय इंडियन हमरा हिस्ट्री रे कर्तव्य भवन. It is inspired by the three कर्तव्य भवन रे एटा कराइला for the first time. Let us know what are those three कर्तव्य. Okay, मन रखो एई सब जो एनालिसिस होची दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एस्पेक्ट आल्सो मेंस एज वेल. इंटरव्यू तो बिल्कुल भी खाना एटा ए जो बजेट का इतरे बहुत डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स अछि बहुत जगह डिस्कशन सारे हला एलाबोरेटली मु डिस्कस करबा एंड जस्ट स्टे विथ मी फॉर दैट वन. फर्स्ट कर्तव्य जदि देखिबा इज टू एक्सेलरेट हला फर्स्ट कर्तव्य इज टू एक्सेलरेट एंड टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय enhancing productivity, right? By enhancing productivity and competitiveness, building resilience and volatile global dynamics. सा माने कौन एठी जो देला कि enhancing the productivity बहुत जरूरी हम कंट्री में because our country is now the most populated state in global माने nation, right? So and competitiveness and building the resilience volatile global dynamics very changing scenario. आज कोटी वार हेगला खाली आगुटी हेगला this affect to our the growth, economic growth. The second कर्तव्य कौन is to fulfill the aspirations of people and build their capacity. People want aspirations build and build their capacity, making them the strong partners in India's path and prosperity. That is second term. Okay, aspiration of people and build their capacity. That means to enhance the human capacity. I mean, to enhance the human capacity. Both important exam point of view. These are very important, right? Third kartavya that is aligned with the vision of सबका साथ सबका विकास. Okay, जो हमर जो मेजर अछि कोन थर्ड कर्तव्य that is aligned with the vision
our vision of Prime Minister vision is that सबका साथ सबका विकास is to ensure that every family, है ना, प्रत्येक family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaning of participation, है ना. कोई भी family भूखा ना रहे, समस्त तुम खाया मिलू. It is not only family and a community, all aspects, okay, family, community, region, sector. Region means it's generally dekha hai ki India re geographically, the coastal regions or the plain areas, they are much benefited rather than your hilly areas or inaccessible terrains. It is because why? Because plain area easy tha. So ei सब जिनस को करा है कि entire geographical regions को India रे expect करा है. जदि मु एटी देखिबी कि this is your western ghat और eastern ghat रे एपट लोक पाइले किंतु plain area लोक भलो सब पाइले एई जो आउ disparity आउ हबनी. That is what the third कर्तव्य mention. सबले मन के एटा analytical questions mains रे भी हेई परिबो. ठीक अछि. देखिबा कोन expenditure जदि देखिबा expenditure these are the हला just have a concise कोठी गवर्नमेंट हमको कोन हम पई गवर्नमेंट कोन खर्च कला मींस आई मीन कोन दबो. लेट्स सी तापरे आ गुटी डायग्राम रे मु तुमको पठेबी कि माने रुपीस हाउ इट कम्स एंड हाउ इट गोस 1 रुपीस हला. ओके प्रथमे जानि देबा ट्रांसपोर्ट रे गवर्नमेंट मैडम देचंती केते 5,98,520 आ माने विजन देखो. Transport is the the lifeline or the very sustainable economy is going to, so is focus on the transportations, right? Pakapaki 6 lakh approximate jadhi mu nebi 5,98,520 or let's say approximate 6 lakhs crore. Can you imagine? This is in crore. This is in crore rupees, right? Rupees. Defense re second half se kiye, it has a prelims very important. Second half se kiye, first as la transport, second as la defense re afse semti 5.94 lakhs crore rupees. Then rural development third, like rural development third, home affairs fourth, that is rural development 2 lakhs 73. Then home affairs near about 2 lakhs 55. Agriculture ऊपर को fifth रे रखा है agriculture आगुरु जोड़ा की जदि हम देखिबा कि 1 decade back government एटा बहुत कम थिला, but now agriculture and allied sectors activities, this is this fifth rank has come near about 1.62 lakhs crore rupees, right? Then education also sixth रे आसी. My goodness, earlier जदि तमे देखिबा हम 15-20 वर्ष तले education रो जम्मा हमरो जदि देखिबा कि हम बजेट रे पाखापाखि below 1% हमर आसुला, but now this the metamorphic change. Government is committed to upgrade the root level means elementary based education system in the country. So education ketala 1.39 lakhs crore. Then energy 7th रे आसी, energy sector top 10 रे. Health आसी 8th रे. Urban development हला 9th रे. Then 10th रे आसी IT and telecom. These are the ranks. हम सेटा देखि नबो. IT and telecom re 74,560 crore rupees. Then these are the things. So हम देखिबा external affairs re 22 and tax admission social welfare of 62,000. This is also important. Social welfare of 62,000 approximate, okay, crore rupees invested. So these are the overviews of expenditure that this time government of India is committed for this one. Odisha विषय में discuss भी करिबा. Okay. बर्तमान आम जाना मेजर हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन बजेट है ना. एग्जाम पाई देखो से भले आकार मु दे दीची. इट टुक्स जदि तमे यूनियन बजेट पढिबो इट्स एन मामत बल्कि जोटा भी गवर्नमेंट रासी. सो कंसाइज वे रे माने केते छोटो आकार जो समरी आकार हम जिनसरा जानिबा. लेट अस नो द फर्स्ट कर्तव्य जदि देखियो प्रथमे वन बाय वन तीनटा कर्तव्य को वर्तमान हम एनालिसिस करबा. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट कर्तव्य. फर्स्ट कर्तव्य एक्सेलरेटेड एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ. Okay, intervention proposed in 6 areas. प्रथम कर्तव्य है 6 areas. Number 1, scaling of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. कौन कहली? Scaling of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Scaling of manufacturing, right? Then rejuvenating legacy industrial sectors. Manufacturing sector तो माने प्रथम दिया है जो because the major aim is to give the generate the employment and to secure the livelihood of the people hela lokongra. Second, rejuvenating legacy of the industrial sectors. Then creating champions MSME hela. Champions MSME माने micro small medium enterprises hela. बहुत बड़ जिनस काहे वर्तमान स्टार्टअप बिजनेस को गवर्नमेंट बेसी फोकस करछि so that people hela people can independent. That means आत्मनिर्भर भारत.
मन रख है दिस इज मेनली फोकसिंग MSMEs माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है मीडियम एंटरप्राइजेस बेसिकली है मीडियम एंटरप्राइजेस बेसिकली आपको फोकस करा नेक्स्ट डेलिवरिंग ए पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर को गोटे पावरफुल पुश दिया नेक्स्ट एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी राइट लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दैट मींस आल्सो एनर्जी सिक्योरिटी को भी फोकस कराई नेक्स्ट डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन्स है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स आल्सो दिस इज जदि हम देखिबा नेक्स्ट टू डेवलप इंडिया एज ए ग्लोबल बायोफार्मा जानबा डिटेल ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग hub and biopharmaceutical शक्ति with an outlay of rupees 10,000 crore मतलब मन रखो जो मैंने वर्तमान जो बायोफार्मा बेसिकली ओके बायोफार्मा और फार्मास्यूटिकल्स जदि हम देखिबे कि को सेक्टर को इट इज योर फार्मास्यूटिकल्स राइट फार्मास्यूटिकल्स को मेजर गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करছে फोकस करছে है फार्मास्यूटिकल्स इज वन ऑफ द वेरी lucrative industry will the ecosystem for domestic productions of biosimilars will be set up over the next 5 years okay next 5 years पर्यंत रहबो सेकंड रे the strategy will include biopharma है pharmaceutical को focused network with 3 new national institutes तीनटा new national institutes को फोकस करे new national institutes of pharmaceutical education and research है pharmaceutical education and research upgrading 7 existing one already existing one already अच्छी 7 existing one हमर already अच्छी ता पूर्वुर ता परे भी government is more focusing on that one right research that is called NIPER Institute of Pharmaceutical Education and Research right this could be questions tomorrow hyperbole right next देखिबा also Madam Sitaraman committed to create world class your 1000 your accredited Indian clinical trial sites जोटा कि आगुर केबे भी नथिला 1000 my goodness it's too much हला बहुत अधिक हला and strengthening the central drug standards जदि हमें देखिबा कि central drugs standard control organization that is CDSCO okay to meet the global standards to survive global standard service then the finance minister has kept special emphasis to the labor in जदि हम एटा देखिबा कि फार्मास्यूटिकल एटा गला एटा वर्तमान देखिबा मु टेक्सटाइल सेक्टर को मु भाग कर दोछु दिस इज योर टेक्सटाइल सेक्टर ठीक अछि एटा जेंति फार्मास्यूटिकल गला प्रथमटा सिंती वन बाय वन जेंति जेंति मु करि कि दोछु तुमको एग्जाम रे भी सेही बळा तुमको बहुत हेल्पफुल हो इट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू राइट टेक्सटाइल सेक्टर कोन द फाइनेंस मिनिस्टर हैज केप्ट स्पेशल emphasis to the labor intensive textile sector को and integrated program with 5 subparts was proposed there कौन so government काहे के फोकस कले जदि हमें देखिबा कि जदि इंडिया पॉपुलेशन रो मैक्सिमम जो माने जो जस्ट टिके जदि पॉवर्टी लाइन पाखा पाखी माने बॉर्डर टच कर मैक्सिमम दे आर एंगेज्ड इन दिस टेक्सटाइल टू जंदि इफ यू गो टू द कॉटन मिल्स so the silk तो यही सब जिन बहुत सारा देखिबो इंडियन विलेजेस मैक्सिमम विलेजेस इफ यू गो टू द मैक्सिमम कोस्टल एरियाज एंड entire the south Indian villages and the eastern India and the north eastern also they are engaged in the textile sector so semanko bhitar tanko boom kariya pe economic independent kariya pe government focus on the textile kahi ki government eta kala eta bhabiya bahut jaruri hela so finance minister kept emphasis to labor intensive textile sector hela labor intensive mane ithre maximum people are engaged what we have discussed now so integrated program with 5 parts kon prathama मन देखि सुनो eta these are very important the national fiber scheme है national fiber scheme basically for self reliance and natural fibers की समाने natural fiber schemes से की आछि silk wool jute man made fibers and new age fibers है एथरे तमर जो silk jute आसिला then wool jute एमन आसिला also the cotton भी also एथरे भी cotton भी रहै ठीक अछि so ei mane rahile tamar kothre this is basically your national fiber schemes next the textile expansion and employment schemes to modernize the traditional cultures with capital support for machinery technology upgradations and common testing and certificate centers right textile expansion
केमती जदि डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिबा टेक्सटाइल एक्सपेंशन हाउ इट गोस टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स दैट इज थर्ड रे ए नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम है ना ए नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम टू इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन है ना इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग स्कीम एंड इंश्योर टारगेटेड सपोर्ट फॉर weavers and artisans है ना weavers और artisans one this is then Tex Eco initiative promote globally competitive and sustainable textile and apparels है ना sustainable textile and apparels next your Samarth 2.0 ठीक है जी Samarth 2.0 modernize and upgrade the textile skill इस Samarth जो particular जो notion था Samarth 2.0 that is to upgrade to modernize and upgrade the textile skilling ecosystem माने गाँ मानकर भी तमर खोला हबो textile centers for training centers through collaboration with industry and academic institution right industries and academic institution right so this is textile sector हमें देखिले next again recognizing MSME as a vital engine of growth right and dedicated 10,000 crore MSME the SME growth माने ସେମାନେ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ କୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଆଉ ମିଡିୟମ ସେକ୍ଟର ସେମାନେ ଫିଲିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଏଇ ଭିଜନ ଟା ରଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ MSME ରୁ SME କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ କୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ମିଡିୟମ ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲା that is what the confidence in our economy right that means our those who are prospects of dhire dhire India is going the we are reaching at the fourth largest economy in the world so that is what the fund was proposed to create future champions basically future champions incentivizing enterprises based on the select criteria it means tapore kon mane ame kon bujiba it means to facilitate the status business to promote career promotion of status business आजकल देखो बहुत सारा IITs पिला हो कि मैक्सिमम they give up the job छाड़ी की समाने कंटिन्यू करछन्ती जदि देखियो गिव अप छाड़ी the job छाड़ी की समाने निज निजर farms they are continuing that one that is called the power of startup business and now India the पूरा world रे देखियो India is now this entrepreneurial activity India is number 1 आज मैं ओडिसा रे भी देखो maximum जदि देखियो कि youths they are engaging this one right so next the finance minister said public capex has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to allocations of 11.2 crore in 2025-26 right 11.2 lakh and financial year 2026-27 jodi dekhiba she proposed to increase 12.2 lakh crore to continue the moment this shows the government vision you can imagine जदि आमे देखिबा 2014-15 रे जतले फर्स्ट टाइम जदि गवर्नमेंट देला माने एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के सरकार से ओनली 2 लाख माने सेतले केते थिला हला इट इज ओनली 2 लाख करोड़ थिला यूपीए गवर्नमेंट जस्ट यूपीए गवर्नमेंट पर से टाइम रे माने ड्यूरिंग दैट मींस during the regime of UPA government it was not above it is always below 2 lakhs crore then जदि आमे देखिबा कि तापरे पुणी केते 2025-26 आसला 11.2 now 12.2 lakh crores is proposed to increase the continue the momentum right the allocation manifold from the public capex जोटा आगुरी एते नथिला just look at the vision of the government this government so next to again now to promote the environmentally sustainable movement cargo the finance minister has new dedicated freight corridors new dedicated freight corridors connecting the Dankuni east to the Surat in the west right Surat in the west এটা बहुत important जदि देखिबा कोन Dankuni just look at the diagram here Dankuni is a place in West Bengal right Dankuni is a place in West Bengal freight corridor कोठी नेबे से माने West Bengal ru nei ki Gujarat that means they are connecting east to west this is your Gujarat right east to west Surat ru nei ki कोठी नेबे Surat हला west रे Dankuni हला तमरा West Bengal this is that means freight corridors means again transportation freight माने जो भी जिनस सब the whether it is an minerals coal हो कि iron हो कि any खाइबा item हो means I mean your food crops or food items हो they all are this covered by this freight corridors and freight रे तमरा maximum जदि हमें देखिबा कि freight is basically not only the railways apart from the railways roads also we can tell right अच्छा
कौन देखिवा रेयर अर्थ कॉरिडोर रे वर्तमान जानिबा कौन होची एला एठी हमें देखिले कि दिस इज द फ्रेट कॉरिडोर जोटा कि तमरो डांगपिनी वेस्ट बंगाल ने कि गुजरात पंत वर्तमान मैडम सीतारमन जदि देखिबा मैडम सीतारमन वाज शी हैज टॉक्ड अबाउट द रेयर अर्थ कॉरिडोर लेट अस नो rare earth corridor माने that element he is talking about the depositions of thorium content let us know thorium content को जगह हमर इंडिया रे मैक्सिमम जदि वर्ल्ड रे देखिबा इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री हाईएस्ट कंट्री जोटा कि वेयर हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ योर थोरियम्स ओके so देखिबा ऑपरेशन 20 ऑपरेशनलाइज 20 द नेशनल वाटरवेज ठीक अछि नेशनल वाटरवे को फोकस कले ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम NW5 नेशनल वाटरवे 5 in Odisha to connect mineral rich areas of Talchera and Anugul and industrial centers like Kalinganagar to the ports of Paradip and Dhamra. This is what the government visions. माने ओडिसा रे जदि हमें देखिबा कोटू तालचेर अनुगुल देन कलिंगनगर माने जाजपुर आउ पारादीप जोथरे कि तमरो पूरा मिनरल लिस्ट नेशनल वाटरवे 5 हमें जानि जंती नेशनल वाटरवे 5 जदि देखिबा इट इज ऑन द ब्राह्मणी रिवर नेशनल वाटरवे 5 राइट नेशनल वाटरवे 5 जदि देखिबा कि ब्राह्मणी रिवर ऊपर रहउची ब्राह्मणी रिवर ऊपर जोटा कि NW5 ब्राह्मणी रिवर ऊपर एटी परीक्षा पचले कोन करिवो दिस इज योर ऑन ब्राह्मणी रिवर ठीक अछि ब्राह्मणी रिवर ऊपर रहउची हैला नेशनल वाटरवे 5 so again training of institutes will be set up for the regional centers and excellence for the development required in the manpower देखिबा एटी NW5 जदि तमे देखिबो कि बेसिकली इटा हुगली आउ ब्राह्मणी के कनेक्ट करछ हुगली आउ ब्राह्मणी हुगली रिवर एंड ब्राह्मणी NW5 हैला नेशनल वाटरवे देखली नेशनल वाटरवे 5 that connects Hooghly river Brahmani Odisha ro Brahmani river with Brahmani to Hooghly river in West Bengal. So government ro vision kon tha कि why government is focusing on the inland waterway system inland waterway system has a tremendous potential which was not previously explored agru hei नथला explore hei नथला वर्तमान से जो government focus कला प्रथम थर पे inland waterway system को आहुरी strengthen करिया पे just look at the diagram 20 new national waterway connecting marine rich areas India रे total जब देखिबा 20 टा marine ना this is your new mineral waterway को connect करिबा 20 अच्छा जदि तमे एठी देखुछ कोन कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आसले बिहार बेंगल ओडिशा झारखंड आंध्र प्रदेश अच्छा नाउ कम टू द हमें जीवा रेयर अर्थ मिनरल इंडिया रे जदि वर्ल्ड रे हमें देखिबा द डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम डिपॉजिट ओके थोरियम डिपॉजिट बना भी सुनो थोरियम डिपॉजिट्स इज मैक्सिमम फाउंड इन कोटी हैला वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड केरला मैक्सिमम thorium is believed to be more powerful and environment friendly than uranium in the production of energy or power productions बहुत important मानता so जेहेतु India is naturally blessed with the thorium okay thorium is a rare earth जदि हमें देखिबा हैला thorium is a rare earth so maximum जेहेतु हमें देखिबा कि India रा total coastal area is blessed with this one eastern coastal part including West Bengal जे देखिबा दीघा एरिया रे सेपटे भी किछि हमरो thorium भी मिले so एटा कोठी मिले तमरा जदि देखिबो कि इट इज द कोस्टल साइड सी बीच रे एगुडा सब थाए ठीक अछि सो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट एनर्जी जदि मैडम सीतारमन एटा भी कहै छथि कि कमिंग जो डिकेड्स आर कमिंग इयर्स दिस रेयर अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑयल माने इंडिया पई एटा ऑयल हैला माने ऑयल ऊपर हमें डिपेंडेंसी कमे कि हमें शिफ्ट करबा टू दिस न्यूक्लियर दिस इज थोरियम और थोरियम मन रखो थोरियम इज highly human friendly means I mean जेमती तमर गोटे हेवी प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स रे यूरेनियम ऑपरेट हुए किंतु थोरियम सेमती हुएनी थोरियम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत बढ़िया काम करिवो एंड आल्सो इट इज वेरी आर इमिटेंस भी वेरी लेस इन कंपेयर्ड टू योर यूरेनियम राइट नॉर्मली सो बेसिकली एंड तार एनर्जी कैपेसिटी यदि देखो इट इज हाउएवर इट इज आल्सो सस्टेनेबल देन योर यूरेनियम and सबुठ बड़ जिनसला सेफ्टी फैक्टर थोरियम इज far safer than the uranium is highly catastrophic so that is what but कोन स्पीड अप बहुत जल्दी यूरेनियम बहुत करे किंतु जल्दी चक्कर कोन हो बाकी सब जिनस नेगेटिव सेफ्टी हो
है सेफ्टी हो कि योर एनवायरनमेंट हो कि पीपल हो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर सिस्टम देखियो कि कॉम्प्लेक्स जदी देखियो मैकेनिकल सिस्टम हमर यूरेनियम रिएक्टर्स हुए बट थोरियम रे नॉर्मल जदी हमें देखिबा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन ऑपरेट वेरी वेल विथ एफिशिएंट गिविंग द एफिशिएंट पावर सो से जो मैडम सीतारमन कहले कि जो कमिंग इयर्स ऑफ यू नो दिस रेयर अर्थ जोटा रहिबा हमर दिस थोरियम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द oil. This is going to driven our economy in the coming time. That the government of India or the Madam Nirmala Sitharaman, the finance minister, has envisaged this one, right? Agu jiba. Next देखिए the budget aims for the amplify to potential cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions here based on the specific growth drivers. So specific budget कौन करे further amplify the potential of cities deliver the economic power. जो city deliver करछन economic power तांको ऊपर भी एटा focus रखिबो and accordingly सेमानकु आउरी driven करा जिवो. An allocation of 5,000 crore CR in 5 years proposed for implementing their plans through challenging mode with a reform come based financing mechanism, right? Next, to promote environmentally sustainable passenger system that is 7 high speed rail corridors बहुत important है कौन कहले this is high speed rail corridor right high speed rail corridor कौन कहले corridors between cities will develop as growth connectors किए namely है बहुत इंटरेस्टिंग इटा 7 speed rail corridors देखो खाली हमें कहबान कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल व्हिच कनेक्ट्स टू द बडोदरा I mean जदी देखिबा कि अहमदाबाद थ्रू मुंबई ता and later on it was expanded to Delhi but now this budget this envisages then 7 high speed rail corridor किए मतलब देखिए that is प्रथमे मुंबई पुणे एनविसेज करछंती मात्र 48 मिनिट रे मुंबई पुणे पहुंच जिवो हैला only 48 minutes can you imagine then Pune Hyderabad jodi dekhibo it's only 2 hours 1 hour 55 minutes ready pahunch jibo Hyderabad to Bangalore only dekhibo the Hyderabad to Bangalore this is only 2 hour then Hyderabad to Chennai that is only 2.55 hours mane 3 घंटा pakapaki Chennai Bangalore that is also 2 hour and Delhi Varanasi this is also approximate 3 hour Varanasi Siliguri jota ki thibo that is a latter also 4 to 5 hours 4 hours maximum so this is what this 7 high speed rail corridors that connecting from region to region where the cultural exchange not only the economic prosperity also the cultural exchange people to people connection that is very much required for a diverse country or the that's a subcontinent country like an India itte bodo huge subcontinent by this is this roadmap is you will be work excellent right next the finance minister said that the second kartavya first kartavya hame sarle next come to the second kartavya jodi dekhiba is to fulfill the aspirations and building capacity right so close to 25 crore individuals है जदि हम देखिबा 25 crore individuals come out for the multidimensional poverty है India रे आज भी हम कहबा कि poverty we cannot achieve the complete eradications of the poverty is there है and multidimensional poverty through decade government sustained and reform oriented efforts okay sustained and reform oriented efforts to promote India as a hub for the medical tourism services promote India as a hub for the medical tourism services eta gala number then dekhiba the medical tourism this health sector or medical or the health sector ठीक है medical or the health sector ପାଇଁ कौन कहले finance minister let's know what the government has kept tourism service the finance minister proposed scheme to support states establishing 5 regional medical hubs 5 regional medical hubs in partnership with the private sector sangare these hubs will serve integrated healthcare complex के that's combine your medical integrated healthcare medical educational and research facilities next they will have IUS centers right IUS medical centers medical value tourism facilitation centers infrastructure for diagnosis
कहीं वर्तमान आग बढ़िया नहीं कि लोक बाहर को जाके ट्रीटमेंट हे सो इंडिया इज वर्तमान बाहर लोक आसुचंदी इंडिया को फॉर देयर स्पेशल ट्रीटमेंट इंडिया इज how such an in the infrastructural and precision equipment we have now. These hubs will provide diverse job opportunities. खाली इतने नो कितने लोग तमें जदि नॉर्मल गोटे हॉस्पिटल को पढ़ा गोटे जो जदि तमें देखियो कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो गोटे को भी तमें जाकी पढ़ा देखियो कितने लोग एम्प्लॉयमेंट पाउछन फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यूज फॉर एग्जांपल्स मु कहबी जेमति भुवनेश्वर रे जो केयर हॉस्पिटल अछि आमरी अछि हला मणिपाल आमरी कितने ह्यूज नंबर ऑफ the staffs are engaging starting from your washings to to the doctors high paid doctors so that is what there's a health facility the government is focusing on that because to generate the maximum numbers of livelihood or the job opportunities again to growth or to the to make the independent economy or the self-reliant economy that is what the our madam your madam Sitaraman finance minister Sitaraman has envisaged right and health professional including the doctors HPs कौन HPs that is your allied health professionals बर्तमान आजिकल देखो तुम कि एमआर मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव से धीरे धीरे सेटअप करी स्ट्रगल कला पर तापर से दे ओपन देयर ओन शॉप बिकॉज ऑफ व्हाट दे gathered or accumulated knowledge and experience that is what so government जदि सेक्टर देखा मेडिकल सेक्टर को भी दीटा जिनस मन रख प्रथम मु कहली टेक्सटाइल एपटे आसला मेडिकल मेडिकल खाली मेडिकल टूरिज्म को से माने करछन सो गवर्नमेंट वर्तमान देखिबो जमते आमरी इन बाहर कंट्री रो भी से माने इन्वेस्ट करछन हमर सेथरे राइट मेडिकल सेक्टर रे next to scale up availability veterinary professionals by more than 20,000 more than 20,000 a loan linked capital subsidy proposed to support the scheme for establishment of veterinary वर्तमान इसने veterinary खाली इटा भाबनी कि only this government is only empathetic to the human no also the animals as well right so एटी कौन देखला कि animal based treatment animal based healthcare this so this budget is so much empathetic both very wonderful budget this time animal based कौन कहले veterinary and para colleges veterinary college जो अछि para college से माने ताकू भी फोकस कले veterinary and the para veterinary colleges ता ऊपर हला animal based health care system एटा मन रखो this government इत्ते बढ़िया बजट एथर का college veterinary hospitals diagnostic laboratories and breeding facilities जेमते मु कहि for examples vulture माने सागुणा they are considered to be one of the most precious for our environment why again because vultures they they digest the dead crops that means they for the pollutions they vultures they protect us from polluting the rivers polluting the air केमती जेमती when there is a dead decomposed animals like let's say an cow or an buffalo they die people used to believe that they think that for their moksha or for their the liberation of the soul they thrown it to the rivers but basically they pollute the rivers and the downstream villages they are getting affected with the various cholera like diseases deadly diseases right but the vultures they eat these dead decomposed these dead bodies so that is why they are protecting us not only the from the waterborne diseases or polluting the water also the airborne diseases so that is what veterinary system jemti IIT Guwahati they are focusing vulture centers IIT Kharagpur they are also focusing this one NIT Silchar they are also focusing on this veterinary part this is also the a specific amount percentage of your allocation of fund has allocated for the veterinary this time बहुत बढ़िया जब हमें पढ़िबो डिटेल्स रे बहुत जिंस हैला so this is also exam रे मेंस रे तक इंटरव्यू रे प्रीलिम्स रे बहुत इंपोर्टेंट this that of notes next India's animation वर्तमान आस कोडी आमे जीवा film industries basically which is believed to be one neglected हैला earlier it was neglected but this government shows is empathetic approach कौन इतरे देखिबा कि India's animation visual effects gaming and cosmic that is AVGC हैला film industry जदि कहबी film हैला film and entertain industry film and entertain industry आपको भी गवर्नमेंट फोकस करछि काहे ना बहुत सारा यूथ को पई कोन करछि ग्रोइंग इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू बी 2 million professional by 2030 government is envisages that to produce 2 million professional for this film and entertainment industries good morning Prabhu good morning right
So the finance minister proposed support the Indian Institute of Creative Technology. कोठी होची Indian Institute of Creative Technology in Mumbai, right? आप कोठी कोठी देखो तुम जो एनिमेशन जो हमें देखुछंती सर पिक्चर रे जेमते अवतार पिक्चर एनिमेशन माने वर्ल्ड रो वन ऑफ द बेस्ट मूवी अवतार, right? 3D animation देखो कितने माने this can generate in a high source of income. That is what government is envisages. हैला animation, visual effects, gaming and comics. So huge earning source. It has got the very potentials for generating the revenues. So support the Indian Institute of Creative Technologies Koti in Mumbai. So it's setting up ABGC content, create your labs, 15,000 secondary schools and 500 colleges. That means this government is it's meticulously to marking the elementary levels, basically the schools and the college level medium. Okay, so that the youths mass they cannot be deviates only माने जदि कहबेनी खाली डॉक्टर्स इंजीनियर्स हेले नो कि साइंटिस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट्स ऑफ दैट मींस एथरो कोन जणा पड़छि डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज envisaged, right? Next, the finance minister proposed to set up National Institute of Hospitality, hela National Institute of Hospitality, by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. Hotel Management or Catering Technology भी government एठी कहछि. It is कौन लिखले एमबी Hotel Management, right? Hotel Management, right? Hotel Management System. देखो एठी प्रथम एठी हम कौन देखिले जदि हम देखुचंती एठू हम जदि देखिबा, right? ग्रोथ कॉरिडोर्स भीतर हम डिस्कशन कला परे रेयर अर्थ कॉरिडोर्स परे नेक्स्ट एक देखो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम डिस्कस करले, देन मेडिकल, देन एनिमल वेटनरी, देन नाउ द होटल मैनेजमेंट. दिस वन बाय डिस्कसिंग, राइट? होटल मैनेजमेंट कौन देखले कि काउंसिल होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी. बर्तमान जदि देखिबो इवेंट सिस्टम जो होउची हमर को बाहागर देखिबो इवेंट सिस्टम, इवेंट मैनेजमेंट रे दे आर अर्निंग मोर देन 25 to 30 lakhs. Can you imagine? So that is what the government is now again for the this is all for the welfare of the public, समस्त भलो पाई जोटा कि ए गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर द सर्वान लोकान सुखेन भवन्तु, हैला सर्वान लोकान सुखेन भवन्तु, जोटा कि हमर मेजर हमर जो सनातन धर्म रे माने जदि हमर देखिबा कि इंडिया रे मेजर मोटिव. Okay, समस्त खुशी रहते because for the finance is very much needed for the for the economic independence. It will again function as a bridge between the academia, industry and government. See, further proposed to pilot scheme for upskilling 10,000 guides, okay, 10,000 guides to 20 tourist sites, even if it's under hotel management and 80 tourism, and tourism sector. होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर by कौन कहले finance minister further proposed 80 tourism sector को further proposed for 20 tourist sites through standardized high quality 12-week training, okay, training in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. जोटा हमर Indian Institute of Management IIM संगे अछि city tourism, just see the vision, government's vision, tourism sector which hotel and tourism सब तो हां इतरे कौन अछि, but एडी देखो कितने यूथ कितने लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाने इट इज इफ यू जनरेट हेबे फॉर एंड देयर लाइवलीहुड इज गोइंग टू बी सिक्योर्ड फॉर यू सी एंटायर हिमालयन स्टेट्स दे आर बेसिकली टूरिज्म ड्रिवन. सिक्किम तमे जाओ तांकर मेजर इकोनॉमी हला टूरिज्म, नेपाल टूरिज्म, ओके, उत्तराखंड टूरिज्म. तो दैट इज व्हाट जदि देखो नेपाल की अरुणाचल प्रदेश हो कि हमर हिमाचल प्रदेश हो मैक्सिमम हिली स्टेट्स तमने पाकर तो बेसी किछि नाही ना बिकॉज़ दे आर लिव इन अपर टेरियन जियोग्राफिकली तमने कोन से बंचिबेनी बिल्कुल भी. That is what the requirement here, this government is so taking care for every sectors for the to secure the economic and the livelihood of the people, right? Next, come to the sports, and sports, even if this government always highlighting for the better health system by sports को कौन देखिबा, the taking forward the system nurturing the sports talent is set up motions with the Khelo India program. देख जेमति कि मोदी जी प्रथम तरह के खेलो इंडिया प्रोग्राम, okay, खेलो इंडिया प्रोग्राम में कौन निकले, the finance minister proposed launching the खेलो इंडिया मिशन transform the sports sectors for the very next decade. वर्तमान आज की देखो स्पोर्ट्स में जेमति साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोटा हमको साई हैला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
है केते बड़ ऑर्गेनाइजेशन बर्तमान देखो धीरे 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 साइज सब डिस्ट्रिक्ट को गलानी है स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट रे एवरी टैलेंटेड जो माने स्कूल लेवल ले जाई से माने टेस्ट करछन और से माने प्रमोट करछन सो इंडिया कमिंग ओलंपिक्स रे किछि वर्ष मध्ये देखो इंडिया इज आल्सो गोइंग टू टेक द रिकॉर्ड्स लाइक चाइना एंड जापान राइट सो दैट इज व्हाट द खेलो इंडिया प्रोग्राम काहे कि एक स्वस्थ भारत मन रखो माने द कंट्री विल हेल्दी व्हेन इट्स पीपल विल बी हेल्दी right so that is what Khelo India is a mission for the government right next the finance minister said that the budget third kartavya second kartavya gala next come to the third kartavya first kartavya gala second kartavya gala now the third kartavya dekho aligns with the vision sabka saath sabka vikas right sabka saath sabka vikas towards a viksit bharat why towards a viksit bharat है विकसित भारत में to for the developed country हेबा पई सबका साथ सबका विकास माने integrity is the major thing right so this requires targeted efforts for increasing farmer incomes है increasing कौन पे यहाँ पे कौन दरकार increasing farmer incomes empowering दिव्यांगजन जमती जी दिव्यांग माने दोज वर जोना के फिजिकली चैलेंज बर्तमान तांको दिव्यांग कहवाची ओके तांको एम्पायर करबा तांको भितर मोरल पावर इंक्रीज करबा okay empowering the vulnerable access to the mental health and the trauma care focuses on the पूर्वोदय states पर जाने आप हमने स्पेशल डिस्कशन एटा करी पूर्वोदय states पर पूर्वोदय states that may entirely northeast regions to accelerate to development and employment of the opportunities can you imagine northeastern states जदि मु नेबी particularly right northeastern states right these are the जने की जीवो सिक्किम Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, and Meghalaya. Because they always feel that they have been neglected from the centuries. So that is what Purvodaya. These are going to gigantic powerhouse that shows for the development. Northeastern states. Earlier जदि तमे देखो 15 वर्ष 20 वर्ष तळे खाली से माने स्कॉलरशिप पैसा देके ना मुंह चुप करा होता. That is not the solution. Development should be occurred from the root level, from the grassroots level, right? So next agriculture content the finance minister proposed Bharat Vistar right Bharat Vistar virtually integrated system accessing agriculture resources right so a basically केमती agriculture को वर्तमान आसो agriculture कौन करचंदी कि this government is very much empathetic for the farmers industry संगरी भी farmers को भी है ना ते माने major focus कर कौन AI tool based multilingual AI tool माने artificial intelligence role of artificial माने देखो ATV कितने artificial intelligence right artificial intelligence that shall integrate the agri-stack parts of the ICR package and the agriculture practices in the AI system. Can you imagine this one? Artificial intelligence also farmers can use how to protect their for the crop growth को थोड़ा केमती तांकर yearly माने तांकर पाखरे information रहिबो for the weather changes weather warning system रहिबो कि आजि मौसम चेंज हो नाही आजि हमें एई समय रे एई मंथ रे हमें लगेबानी खरा बेसी हो लू होइबो from pest disease control पई what which type of pesticides or which type of organic manures were used जदि organic manures को type रे हो को केते कम पैसा रे मिलिबो that is all the information from the government is indicated with the AI tool AI tool artificial intelligence through it. This will enhancing the farm productivity will help बढ़िया में इनको help होगा enable better decision for the farmers and reducing risk by providing customized and advisory support right customized and advisory support. This is for the agriculture only to make an sustainable for that sustainable farming practice farming practice or and economy for farmers farmers मानक पई जति जोटा कि maximum जो rate होतला farmer suicide ई सब जिंस देले कोन हो one farmer can meet its exigencies right meets its exigencies. Next self help group. Now come to the self help group जो the building on the success of the Lakpati Didi program. जेमते देखियो कि woman this is a one tool for the women empowerment program. Women empowerment जदि तमे देखियो Lakpati Didi scheme women empowerment है Lakpati Didi schemes. Self help entrepreneur जो देखियो कि SHE marts will be set up community owned retail outlets
within the cluster level federation to the enhance the innovative financing instrument. आज तुम देखो बालजात्रा जो भी होची बालजात्रा हो कि छोट छोट जगह देखो कितने वुमेन माने से माने आसी सेठी निजर हैंडीक्राफ्ट हो कि आचार हो कि पापड़ हो कि एनी काइंड ऑफ खाଇବା बने कि से माने करछन that is what the self help group they help themselves economically, they are making themselves sustainable, okay, or self reliant independent se mane करछन. So that is what government is also helping the self help groups and खास करके Lakpati Didi schemes for the women empowerment at the grassroots level. East corridor को जिबा, the finance minister madam proposed the development of integrated east है ना जदी देखिबा कि east coast industrial corridor with a well connected Durgapur है ना Durgapur, that creations of 5 tourism destination in the 5 Purvodaya states and basically 4,000 e-buses. East corridor ऊपर केंद्र focus, this is basically east corridor है ना Indian eastern states looking at the eastern, ठीक है ईस्टर्न रीजन्स ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जेमति कि आगे प्राइम मिनिस्टर प्रति वर्ष भला एवरी सक्सेसिव ईयर्स रे से कहउछन्ती पूर्वोदय, ठीक अछि, और द ईस्टर्न स्टेट्स आर द ह्यूज रिसोर्सेस of potential for the economic growth काहे already west is developed Mumbai पे south is developed north is developed, so east को समाने focus करछन्ती eastern region of India or eastern states basically कौन madam also proposed Sita madam finance minister madam Sitaraman proposed the scheme for development of the Buddhist circuits. आप रे कोन हबो जदी देखिबा कि again the culture है ना Buddhism peoples normally that one Buddhism religions को focus करछन्ती Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, Tripura. Maximum Buddhist जदी तमे देखिबो this is the northeastern states they are found, okay, Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur, Mizoram and Tripura. So Buddhism को majorly focus करछन्ती. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrims, okay, monastery centers and connectivity to pilgrim amenities. That is what this budget has focused. So एटा हमें देखिले कि फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य जोटी आरंभ रे देखिबा फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य एंड थर्ड कर्तव्य जोटी कि हम एठी आरंभ रे डिस्कस करले, राइट. एटा हम आरंभ रे डिस्कस करले कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कर्तव्य एंटायर एक्सप्लेनेशन इज देयर. ए एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली खाली तमरा प्रीलिम्स सहित भी मेंस और इंटरव्यू रे भी हेल्प करबो एंड खास करी प्रीलिम्स रे बहुत सारा क्वेश्चन तमे शॉर्ट रे बहुत जिंस पाइजो एंड एंटायरली वी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट, एंटायरली वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक अछि. तो वर्तमान हम आगु देखिबा कोन रुपीस जो आसुची कोटी रुपीस कम्स फ्रॉम कोटी रुपीस गोटे आसुची. लेट्स सी रुपीस जदी आसुची गवर्नमेंट प्रथम इनकम जाने रुपीस फ्रॉम मींस इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर देखबा. इनकम कोटु आनुची गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स आनुची 18%, then borrowings and liabilities to 24%. Government is going to to receive non-debt capital is 2%, non-tax revenue 10%, GST and others 15%, then your customs 4%, union excise that is 6%, income tax 21%. So एठी नै कि हमर गोटी टंका आसी गवर्नमेंट रा कलेक्शन गोटी टंका खर्च केमती होची जस्ट लुक एट हियर है ना, दैट इज इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर जोटा कि हमें प्रथम स्टार्टिंग रे मु तुमको कहितली है ना. इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर इज द बजट. और भी कहितली बजट इज नॉट एन incorporated in your Indian constitution. It is basically the annual financial statement according to article 112 that says about this one. Budget बोली सेमती किछि भी नाही, तो मुझे इंटरव्यू पचर बजट सेमती किछि नाही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे. It is article 112 which talks about the your annual financial statement, right. So वर्तमान देखो एक्सपेंडिचर कोन अछि कार गवर्नमेंट खर्च कोन करछि. स्टेट शेयर होल्डर्स टैक्सेस 22%, अदर एक्सपेंडिचर 7%, then your civil pensions 2%, central sector pensions माने देखो 2% पूरा बजट. Can you imagine कितने माने that means protecting our experience around rich माने senior citizens which is in a storehouse of your experience. That is what, right, 2%. Then central sector 17, major subsidy 6%, defense 11%, defense re yearly it was used, interest payments 20% government joins 20% interest, then centrally sponsored scheme 8%, finance commission and others transfers and 7%. This is what the government is government has kept for this one, right. Okay, ठीक है. So it is all about the discussions. Again just for a small highlight, just एति कहबी कि this is Odisha civils re as earlier also told Odisha civils re already geography hostels UPSC पे batch already offline batches have started from last 4 years 5 years to chalchi offline batches.
Online batches are already this year started from last 4 months through. So जो many interested, they can connect me over the 797-8090-907. This is my number. You can connect with me for your optional, especially geography optionals, your for UPSC offline and online for the OPSC as well. So general studies batch also going with the full swing. Those who are interested, they can connect with me, right? So thank you so much. Thank you everyone for your all your patience. I hope ये जो बजेट डिस्कशंस कला डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू आपको बार बार आपको पढ़ो एंड मेक्स ए नोट ऑफ दिस देखिकी एंड कमेंट रे पिन बॉक्स करो कि पूर्वोदय स्टेट्स रे जोटा कि बुद्धिस्ट आउ बुद्धिस्ट छड़ा माने अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियन आउ कोनटा जो रिसोर्सेस कोन छी मु गोटे देली तमन को असाइनमेंट कि सेटा को टेक्स्ट करो मते पिंग करो कमेंट बॉक्स रे कि को मिनरल रिसोर्सेस जोटा कि ईस्टर्न स्टेट्स मानकर गच्छित होई अछि मींस इट्स अ special stored or reserved in the eastern states of India, and that is what our Prime Minister Narendra Modi ji is specially focused on the eastern development of the eastern states, that for the economic growth and for the overall prosperity. Okay, hope this session is useful to everyone. Thank you so much. Take care everyone. Okay, have a good day. Jai Jagannath.